Assalamu alaikum and a very warm welcome to Live on Shifam. हम दोबारा हाजिर हैं with another very informative session for you during this time of the pandemic. इस वक्त जब stress levels high हैं and इतनी misinformation चल रही है, you have to really get up to understand कि क्या सही information है, क्या are we doing the right thing, are we wearing the right protective gear, क्या हम right amount of days quarantine कर रहे हैं, isolation सही है. We are in the middle of the second wave and it has hit all of us very hard globally, nationally, locally. तो I hope सबका दिन अच्छा गुजरा है और आप सब अपना ख्याल कर रहे हैं और आप एहतियात कर रहे हैं. On this note, Shifam has been bringing you the opportunity कि आप अपने घर में बैठ के टेस्ट करवा सकते हैं for 5,000 rupees and you can call in and do and book an appointment and get yourself tested for COVID for the PCR test at 4,500 rupees. So you can avail this opportunity and you can call them up at 371-332273. आज हमारे साथ we have Dr. Anokhi with us once again because हमने इतना कुछ सीखा और समझा उनसे. So we thought, why not bring Dr. Anokhi back and understand some of the very fundamental and basic things जो हर caregiver और हर parent अपने बच्चे के बारे में ज़रूरी information पूछने की, मालूम करने की, जानने की कोशिश कर रहा होता है. So I know that we are in very good hands and Dr. Anokhi हमारे लिए बहुत simple ways में हमें बताएंगी, हमें सिखाएंगी. Again, Dr. Anokhi Khanam is a PhD. She is a child specialist and extremely accomplished. She has her particulars up on our Shifam site. And without any further ado, because again, these are frontliners, they are doctors, and their time is extremely precious. So let's add Dr. Anokhi with us on stream. Assalamu alaikum, Dr. Anokhi. Walaikum salam. How are you today? I know you're very tired. Okay, thank you. Thank you so much for being with us and taking out time because आप जो information share करेंगी, we know how important and what valuable information it is. So, Dr. Anokhi, without any delay, let's just dive into the importance of understanding a child's developmental milestones. जो जब माँ बाप अपने बच्चे, जब newborn baby पैदा होता है, तो माँ बाप को क्या first few guidelines बताई जाती हैं for their child? Okay. First of all, I'd like to highlight the importance of well checks. ठीक है. आजकल की जो pediatrics होती है, आजकल की medical practice is all about prevention. ठीक है. इसका मतलब है we step in even before things happen, and this is where your well checks come in. तो आपके बच्चे जब पैदा होता है, तो पहली well check जो होती है at birth होती है. So either the midwife or the pediatrician does a quick review of the child at birth. And in most instances, they do another review before discharge, but that's not always required, but it's preferred. Okay? In my practice, I recommend patients to come as soon as possible after discharge, because पहली जो चीजें हैं after birth is to remember is जब बच्चा पैदा होता है ना, पेट में बच्चा खा पी नहीं रहा है, ठीक है? They're not eating, they're not drinking in the belly. So when they're born, the first thing they have to learn is to drink milk, to drink the mother's milk, okay? And not all of them are able to do it straight away from the get-go. So there's a little bit of, you have two kids, so okay, there's a little bit of, give and take, tugging here, this and that, experimenting and learning, okay, how do you latch the child, how do you feed the child, etc. Now, taking this into account, babies are usually born with an extra amount of fat that allows them to survive a few days, okay, with low milk intake. So nature has given us that opportunity to allow our babies to survive, okay, even when not getting their full mother feed, okay.
Now the child needs to be of a decent weight, so they should be like over 3 kilos, etc. When I'm like satisfied, it's okay, you know, they're allowed to lose a little bit weight. Beyond that, usually what we do is we check the baby's weight to see कि कितना वजन कम हो रही है. ठीक है? So in the first week of life, your child is allowed to lose up to 10% of their birth weight. Okay? More than that, we need to step in and help out. So that's one of the first questions that I get asked when the parents come to me, कि मेरा बच्चा is losing weight and I'm very, very concerned. And then they'll notice the first thing I ask, what's the birth weight? I check the current weight. I calculate, is it more than 10% or less than 10%? In most instances, it's less than 10%. And then I go through the history, how the child's feeding, etc., etc. And then I call them back again after a few days for a weight check. And once the child starts putting on weight, we're good. And usually within the first 2 weeks, the child's reach their birth weight and overtaking their birth weight. So the first thing at birth is basically weight. Okay? Other things is your child's response to sound. Okay? Are they responding to sound or not? So unfortunately, Pakistan, we don't do a hearing screen. Unlike in Europe and the US and all these places where the babies are automatically got their hearing screen at birth, in Pakistan, we don't always do that. I think there's only one hospital that does it, but most of them don't. So that's something that we keep an eye on for, is the child reacting to sound or not? Okay. Then another thing we look is the tone of the child. Again, some of these things parents can see at home, but most of them you do need to bring your child in for a pediatric review. Okay, we see the tone of your child. Then we have what we call are the primitive reflexes at birth. Okay, which usually disappear within each reflex kind of disappears within the first few months of life. But yes, we see, are those reflexes there? Are they, symmetrical? Is the child responding and reacting properly? So usually when the parents come in, the mother's like jumping every time I'm doing something with the child. And I keep reassuring, I was like, this is just the primitive reflex. We're checking, the motor reflex, the stepping reflex, etc. We're just checking how the child is doing. And in the first 2 months, the child doesn't have much head support. Okay? So the head is like a rag doll. So you need to make sure you're supporting the head. Okay? Other things to remember, which I think I will say now only because I think it's really, really important, is from birth, you start routine. Okay, from birth, you start routine, which is your 6:30 to 7:30 wind down time, which is basically if you're going to do your bath, do it then, your massage, whatever you want to do. Okay? Like a broken record, 6:30, 7:30 wind down time, 7:30 lights out. Okay? And then 7:30 in the morning, you can have lights on again. At night, the child will wake up, feed, poop, peep, whatever. But you want to get that routine in so the child notices between these two timings, it's night. Between these two timings, it's day. And by 2 months of age, the child actually starts recognizing the day-night cycle. Now, the reason why we're particular that the night sleep actually falls at nighttime is because your sleep hormone and your wake hormone are set according to the sun. So I have parents coming to me, they're like, it's okay, my child sleeps at 1 o'clock, but they wake up at 1 o'clock in the afternoon. And I'm just like, that's not good enough. Okay? It's your biological clock, the hormones, etc. You are basically not using that. You're stressing the child's body out. And it's only during the nighttime nap that the growth hormone is secreted, brain development takes place, and what you call growth and, rebooting of the immune system, etc. This is why, even though newborn babies do not sleep throughout the night, and they should not sleep throughout the night, but you want to set those triggers so that when the time comes, they automatically recognize them. So you don't have to officially do like before 6 months, there's no sleep training. But you just want to make sure, and most of the parents who do this, the child tends to slip into the sleep cycle, and they don't really need to do sleep training at 6 months because the child just slips into their normal routine. So that's one of the few things that we talk about at birth. Another thing which is really important, which is not spoken of enough in Pakistan, is sudden infant death. That's one thing you have to have that talk before sending the child home. So sudden infant death is unexplained death in children under the age of 1 year. We don't know why, but it happens. Because of that, guidelines have been developed, which are practiced throughout the world, which is basically, there are just some simple rules. Number one, the child sleeps in their cot on a firm bed, not a soft cushiony bed, no runners, none of those egg-shaped things to snuggle the child in, no pillows, no head-forming pillows, nothing. A firm mattress, tight sheet,
dress the child warmly rather than putting layers of kapri on top of them. Anything that can suffocate the child should not be around the child. Child is always on their back, not on their sides, not on their stomach, always on their back. Okay. For parents who want to read some more, there's the healthychildren.org. It's the website by the American Academy of Pediatrics, or you can see the NHS website, which basically write a lot of detail about the sudden infant deaths and the precautions. It's a very rare condition, but because it happens, we want to prevent it. Okay. The next concern that I get when I'm talking about get on to the next thing, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, because again being culturally relevant is very very important. तो हमारे मुल्क में क्या होता है कि cots and beds और child cots बहुत एक secondary चीज हो जाती हैं, because in the masses what most of the babies के साथ हो रहा होता है कि वो माँ के साथ सो रहे होते हैं. So उन माँओं को ये information disperse करना और समझाना कि how dangerous it can be अगर आप बच्चे के ऊपर सो गई या अगर आपका हाथ बच्चे के ऊपर रह गया. So these are all the things that we are looking at. And to go back in a little back into the conversation that we were having about regulating the child's, you know, बच्चे को ये समझाना कि दिन और रात में क्या हो रहा है is also because बच्चा womb से निकल के आ रहा है. तो for him it was all the same. उसके लिए तो दिन रात हर चीज there's no difference. तो उसको समझाना कि अब जब तुम इस दुनिया में आए हो तो there is a particular difference between the night and daytime hours. So just pulling along and telling parents that ये सारी चीजें are nobody knows these things from before. हम सब सीखते हुए चल रहे हैं. So again, sorry. No. And a reminder कि हम sleep training नहीं कर रहे, हम बच्चों को force नहीं कर रहे रात को सोने के लिए. हम बस triggers establish कर रहे हैं कि 6:30 से 7:30 बजे हर दिन हम वही चीजें कर रहे हैं to relax the child, और 7:30 बजे के बाद lights out. आप एक छोटी सी नाइट लाइट या बाथरूम का डोर खुला रख सकते हैं ताकि लाइट आए, ताकि जब आप बच्चे के पास आए फीडिंग के लिए, डायपर चेंज या कुछ भी, you can see what you're doing. It's just to develop that day-night cycle. That is all. We're not forcing any sleep training. Or बच्चे should not be. So usually in the first month, the child is feeding every 2 hours. Okay? Then eventually they start stretching. So every 2 to 3 hours in the first month or two, and then they start stretching. So you should not, if you see your child is sleeping for 4-5 hours in the first month, okay, and on a regular basis, that is concerning. That is very concerning. There are instances जिसमें बच्चा cluster feeds at one spot and then sleeps, 4 hours. That's different. But if you're seeing regularly, the child is only coming to feed every 4 hours in the first month in particular, that is concerning and requires review. Okay, so it's just important to understand, and a lot of this stuff is explained in the clinic. If you're doing a well-checked clinic, a lot of the stuff is explained. There's a lot of education that we do. We give a lot of, and as I said, you can go to the American Academy of Pediatrics or the NHS website to actually see the guidelines, what is recommended, etc. with babies. Another thing to highlight is शहद बच्चे को मत देना. 1 साल की कम उम्र के बच्चे को कभी शहद नहीं देते, जहर होता है, बच्चा मर सकता है. I don't know how to emphasize this more, क्योंकि हमारी कल्चर में है ना गुटली या वो क्या बोलते हैं मुंह मीठा करने के लिए ट्रेडिशन है एक. हाँ, तो that is very dangerous. So please मत देना. 6 महीने के कम उम्र के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, माँ का दूध. अगर खुदा ना खासा माँ का दूध नहीं है तो फॉर्मूला विद बॉइल्ड वाटर, और अगर आपको if you have to use the bottle, sterilize करके, ठीक है. So it's really important to follow these rules and regulation, because दूध से बच्चे को बीमारी भी मिल सकती है बोतल से, अगर बोतल सही से साफ नहीं हो रहा, अगर दूध सही से प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो, because just remember your formula is not sterile. So formula needs to be in boiled water because it's not sterile. तो इन सारी चीजों से बच्चा बीमार भी हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं माँ का दूध इज द बेस्ट. डॉक्टर अनोखी, एक और चीज, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट, लेकिन हो सकते हैं इंस्टेंसेस कि माँ को दूध नहीं आ रहा हो, या माँ के ब्रेस्ट में गुठलियां या मेस्टिसिस, कुछ बहुत सारी इश्यूज होता है, बच्चा लैच ऑन नहीं कर पाता, बच्चे को ज्यादा भूख लग रही होती है. सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज. लेकिन जब पेरेंट्स को ये समझाना हो कि वो अगर पेरेंटल लॉजिक अपनी यूज करें और वो कहें कि देखें हम लोग फॉर्मूला में भी तो दूध दे रहे हैं, तो बच्चे को पानी क्यों नहीं दे सकते.
सो 6 महीने से कम उम्र बच्चे को हम क्यों नहीं पानी दे सकते? इफ यू कैन, तो जस्ट थिंक इन लॉजिकली, ठीक है, योर चाइल्ड रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज, दिन में कैलोरीज चाहिए ना, अगर आप बीच में पानी पिला रहे हैं ना, तो आप पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना इज नॉट बीइंग मेट, ठीक है। सो यू मस्ट नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस गिव वाटर। और उसी लॉजिक से आप आपको समझ में आना चाहिए कि दूध के अंदर पानी है, तो अगर बच्चा प्यासा है तो वो दूध ही पिएगा, ठीक है, तो उसको अननेसेसरीली एडिशनल पानी देने की जरूरत नहीं है। That's really something very important to remember. ठीक है। अगेन डॉक्टर अनोखी, पेरेंट काउंसलिंग, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो पीडियाट्रिक्स के अंदर एक कंसर्न होता है, या पीडियाट्रिशियंस को एक कंसर्न होता है कि माँ बाप को बिफोर द बेबी कम्स इनटू दिस वर्ल्ड काउंसलिंग नहीं की जाती। तो अगर हमारे पास पेरेंट्स होते हैं जो अपना बच्चा फर्ज करें 1 महीने बाद डिलीवर करने वाले, एंड अगर वो चाहते हैं कि वो अपने लिए इंफॉर्मेशन फराहम करें या अपने बच्चे की पीडियाट्रिशियन ढूंढें और उनसे बातचीत करें, तो वो माँ बाप वो हाउ डू दे गो अबाउट दैट, वो किस तरह कर सकते हैं? तो I've had that cases also कि जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, मगर इन पर्टिकुलर दोज जहां पर उनको पता है कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, सो दे आर कंसर्न्ड, सो दे वांट टू सी द पीडियाट्रिशियन before actually the child is even born, to kind of reassure themselves, to sort of set things up. You just need to make I mean, with in my practice, it's possible. Just make a what you call a prenatal appointment. मगर याद रखना, आपके जो पीडियाट्रिशियन है ना, वो बच्चे को पैदा होने के बाद देखते हैं। पैदा होने से पहले it's your obstetrician who's looking at the fetus and the child, etc. So, and the baby and the child, etc. But पैदा होने के बाद it's when the pediatrician takes over, or the neonatologist, depending. अगर अस्पताल में है तो neonatologist होती है, अगर you know inshallah everything's fine and you discharge home, then it's your pediatrician who takes over. And then वही तो बोल रही हूँ ना, तो we have our regular well checks. तो पहले 2 साल में the most highest frequency of well checks होती है, क्योंकि highest velocity of growth होती है। तो बच्चे सबसे ज्यादा डेवलप और ग्रोथ तो पहले 2 साल में होती है ना, तो उस वजह से हम बहुत फ्रीक्वेंट वेल चेक्स करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द हमें पता चलता है कि अगर बच्चा इज नॉट ऑन द ट्रैजेक्टरी दैट दे आर सपोज्ड टू बी, अगर बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, ताकि हम स्टेप इन कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड, हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अगर बच्चे को व्हाट यू कॉल असिस्टेंस लाइक एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है टू reach his milestone, so then we basically actually try to facilitate that. One of the examples is, मेरे पास बच्चे आए, काफी दफे आए, जो they're not walking on time, मगर that wasn't a physiological issue, that was a parent made issue, क्योंकि उन बच्चे के लोग हर वक्त बच्चा को हाथ में ले रहे, nobody is letting the child go, ठीक है। तो मैंने देखा है कि बच्चा getting up, wanting to walk to their chair, they're holding the hand and taking the child, and then pulling the chair and sitting the child down. So you have to be careful. The child needs to tumble, the child needs to fall, the child needs to experiment to learn. Okay? They are going to tumble, they are going to fall. I say children are like rubber, they just bounce. Okay? You need to obviously keep a safe environment. So basically you need to make sure the stairs are blocked off, any open water sources are blocked off, and all that stuff. वो सारी safe environment होती है। मगर जब बच्चा पैदल शुरू, when he's starting to walk, he's going to tumble, he's going to fall, they're going to start running. They have lack of, their coordination is not quite there, to stumble and fall हो जाते हैं. But you need to let them so that they learn. So I've had like a few kids like that. जिसने मैंने बोल दिया, मैंने ban कर लिया. I banned the parents from holding that child when they're walking. Within 4 weeks, the child is running in my clinic. ठीक है? And another thing, just before you go on, really important fact that I need to highlight here. पाकिस्तान में and in a lot of countries लोग सोचते हैं कि अच्छा 2 साल तक बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, हमारे खानदान में कोई नहीं बोलता 4 साल से पहले, ठीक है। That is wrong. That is absolutely wrong. ठीक है। अगर आपके बच्चे, तो हम पूछते रहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है 2 महीने की वेल चेक, तो पहले 6 महीने में the child's coming almost every month. After that it's every 3 months, and then after 18 months it's at 2 years, and after 2 years it's once a year. ठीक है। तो रेगुलर वेल चेक्स होती है। और पैदा 2 महीने की वेल चेक पर मैं पूछती हूँ कि इज योर चाइल्ड कूइंग,
going ooh ooh, you know, making different sounds, different volumes. At 6 months क्या आवाजें बना रहे, at 9 months क्या आवाजें बना रहे, ठीक है? And usually by 9 months and 1 year they say mama mama baba baba sort of thing. So we checking these milestones that the child is reaching this milestone. और फिर 18 महीने तक अल्फाजें बोलना शुरू कर देता है. And then basically by 2 years the child should start making short sentence, putting 2-3 words together to make a sentence. अगर ये चीजें नहीं हो रहे हैं तो the child needs to be investigated कि is this just genetics के खानदान में the delayed speakers और अगर is there something else happening. तो थोड़ी सी investigation हम करते हैं which includes the hearing test, because sometimes मेरे पास बच्चे आए जो सही से सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, and the parents are like मगर जब हम चीखते हैं तो he understands. I was like, he's not hearing you. He's hearing a sound that he recognizes as his name, but he's not hearing you the way we are speaking. So he's not able to mimic. Okay? And then you have other kids who are delayed speakers, but the pathology is unknown. हमें नहीं पता क्यों. उन बच्चों को, सब बच्चों को हम स्पीच थेरेपी शुरू करवाते हैं और फिर पेरेंट्स सोचते हैं मगर ये क्यों, फायदा क्यों होती है. ये याद रखना है कि इफ योर चाइल्ड इज बिहाइंड, सारे दोस्त पाकिस्तान में सब लोग बहुत टेंशन मारते हैं ना कि मेरा बच्चा 3 साल पर लिख नहीं रहा, मेरा बच्चा 5 साल पर पूरा सेंटेंसेस नहीं बना रहा. They don't make sentences, but you know the stress that's there. जो बाहर के मुल्क में, Finland, which has the top educational systems in the world, they are not allowed to write before the age of 6 years क्योंकि उनकी dexterity नहीं है, and most kids are not ready to write. Some of them will write by 4 years, but most of them are not ready before 6 years. So they don't expect them to write before. यहाँ पर 3 साल से शुरू कर देते हैं लिखना. मुझे कॉल्स आते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल पर नहीं लिख रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, नहीं बैठा. I was like, the 3-year-old child वो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा. He's going to explore and research. And then on the other side जब पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं, if I'm telling them कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो आपको स्पीच थेरेपी शुरू कर रहे हैं, वो embarrassed हो जाते हैं. वो सोचते हैं कि नहीं, I don't want my child to be tagged as delayed in any way. And I'm just like, अगर आप बच्चे को मदद नहीं करें, ये जो गैप हो रही है ना दूसरे बच्चे से, as they grow older this gap increases because आपका बच्चा is struggling to catch up throughout. ठीक है? So he will permanently be at a disadvantage and it will take him a very long time to catch up if at all. तो इसलिए मैं बोलती हूँ speech is a common thing जहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत डिले हो रही है. So it's a common thing where we can actually, and in most instances हमें नहीं पता कि speech delay क्यों हो रही है, which is at least there's not anything in the background that is anything nefarious or serious. मगर there we can help them out with speech therapy to kind of push them on their way. So that's really important. And here we talk about early intervention. I know कि हमने list थोड़ी differently हमने अपना post लगाया था, लेकिन milestones achieve करने के वक्त hand in hand early intervention goes along the way. And जैसे कि आपने बताया कि speech therapy जब आप कह रही हैं तो थेरेपी का नाम सुनते ही पेरेंट्स जो होते हैं उनकी आंखें फट जाती हैं एंड वो कहते हैं ओ माय गॉड ये हमारे साथ क्यों हो रहा है. बट जो माँ बाप को समझना बहुत 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 जरूरी है कि इट इज अ फैसिलिटेशन. आपके बच्चे को फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो एक माइलस्टोन वाले एक एवरेज माइलस्टोन अचीव कर सके. क्योंकि जैसे कि डॉक्टर अनोखी कह रही हैं कि वो अगर गैप बढ़ते गया तो बच्चे को और ज्यादा इश्यूज फील होंगे. एंड डॉक्टर अनोखी आई एम श्योर कि आपके पास इतने सारे बच्चे आते होंगे जो इनिशियली सिर्फ शायद हियरिंग एंड स्पीच में स्ट्रगल कर रहे थे एंड देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर एकेडमिक्स बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि इधर एकेडमिक्स पे इतना प्रेशर होता है कि जहाँ पे बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुई हो उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फील होती है. हाँ, और and the research, like for example in the US, in the UK, etc. अगर आपके बच्चा रेफर हुआ है और आप अपने बच्चे, if you go beyond a certain age, they won't give you a urgent appointment क्योंकि उनको पता है इतना impact नहीं होता जितना 2 साल पर होता है. So the earlier you intervene, the greater the impact. तो जब लोग सोचते हैं नहीं we want to wait. I want to wait another year to see what happens. It's okay. I'll just put him in school. It will improve. I will do this. It's better to do that step, put him in early so that he can, because the greatest impact is at the younger age. The more you delay it, the less impact any intervention is going to happen when your milestones are delayed.
And this is such an important subject that we are talking about, Dr. Anokhi, because I know for a fact कि जब आप you are sitting across the table and आप पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन या इस वक्त हमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चे की बेहतरी कर सकें, एंड वो जो टाइम लैप्स हो जाता है जहाँ पे माँ बाप खुद आर नॉट बीइंग एबल टू कम टू टर्म्स कि ये क्यों हो रहा है, it could be just a small a few sessions, 2 sessions, एक सेशन जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट बता देगा ओके एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फैसिलिटेशन इज रिक्वायर्ड एंड अ लिटिल बिट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. लेकिन यहाँ पे आपका काम एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज अ पीडियाट्रिशियन इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप एक काउंसलर भी बन जाती हैं माँ बाप के लिए, जो आप उनको समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि क्यों दैट थेरेपी इज रिक्वायर्ड. So it becomes a really daunting task. Do you feel at this point in time that there should be family or child specialist counselors available? क्योंकि हमारे मुल्क में no, there's I can't remember her name. There is a family therapist. There is a family therapist. We have peds psychiatrists, so we do have things in place to get to help us out. I do refer children depending on what is needed. Yes. So no, we have things in place for that to help families out. It's a matter of parents availing that. Yes. So, that is my main thing कि हमारे पास वो चीजें हैं, दस्तयाब हैं, लेकिन So I need to also say the flip side of this, क्योंकि मैंने सिर्फ नेगेटिव चीजें बोली हैं, मगर मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो खास तौर मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको महसूस हुआ है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, like there's something wrong, but nobody is taking me seriously. ठीक है? And I have those parents who also come to me. I have parents who come to me with children with anxiety, children with depression, and then I do. So as a general pediatrician, yes, you have to come to me first because I need to check their general health, do their blood works up to make sure कि कुछ और तो नहीं हो रहा है that's causing this, and then I refer them on to the ped psychiatrist or wherever they need to go to help them out. So I do have parents taking that very seriously. Same thing, we have a few children on the spectrum, okay, who've come to us, who've been diagnosed. We do what we call an MCHAT screen at 18 months, okay? And over there, it's just a screening tool that helps us see if the child, whether there's no risk of autism, moderate or high risk. Usually if there's mild, moderate, we do a repeat depending on the symptoms. If there's severe or high risk of autism, then we refer them for further evaluation. और फिर भी लोगों को समझ में आना चाहिए कि a lot of these learning disabilities are a mosaic. It's not and or. It's a mosaic, and the child's brain is developing, so it can take sometimes a few years to actually sit on a diagnosis, to come to a conclusion. You know, we no longer just say autism. It's a spectrum. The spectrum means that it's on the both things. So the child has a sensory disorder or something or the other. Because I've had parents coming to me with diagnosis and they're saying there's nothing wrong with the child. I was like, your diagnosis is not saying that. It's just not saying your child is autistic, but it's saying your child does have some deficiencies that need to be worked on. Have you done that? And they're like, no, because they said he's not autistic. I was like, they may have said he's not autistic. And this has happened repeatedly. I was like, but they've said there's an issue there. He needed speech therapy, occupational therapy. Did you do all of that? No, because I didn't realize it was necessary. So it's important. First of all, immediately, हम नहीं बोलते autism, ठीक है? हम spectrum बोलते हैं, and sometimes there are different things. मेरे पास बच्चे हैं जो सिर्फ sensory disorder होते हैं, who are having sensory disorder. And then ADHD, the same thing. I have parents coming. I was like, your child is just energetic. Your child doesn't have ADHD, okay? Because घर पर सिर्फ parents देखते हैं, child is very energetic. I'm like, are you getting complaints from school? No. Then it's unlikely, because ADHD, they will be doing it in both places, etc. And usually ADHD is a diagnosis that we do later on. We don't do it as young as 2 years. 2 years, children are just lively, sort of thing. With the spectrum disorders, you often have feeding difficulties. The child is a seriously fussy eater. So this is not your normal fussy eating. It's impacting their growth. Okay? All children are what we call brave eaters because they don't like putting that stuff in their mouth. But they do get their required calories. Most parents are measuring their food intake based on adult food intake. आपको याद रखना है, जब आपका बच्चा खाता है, आपका बच्चा का पेट का साइज है उसका मुट्ठी, ये मेरा पेट का साइज है.
or maybe I'm like struggling with my weight because I'm eating more than that. Okay? So basically, that is what they need to eat. If they've eaten that much, they're good. Okay? I've had instances several times where they've come in with a feeding issue, and we're doing the whole autistic screen, the MChat, and the child is scoring very high, and I've given recommendations and tests and everything. And parents are not happy to hear that. They're like, "Nee, my bacha is just not eating." I was like, "Yes, but there is a high suspicion that there may be a pathology behind that. So we need to sort things out and we need to investigate." Magar unko they don't want to hear it. And on the flip side, you do have parents who are very good, who do everything to sort it out. Now, just remember, अगर आपके बच्चे को behavior issues हो रहे हैं, पहली चीज तो मैं पूछती हूँ जब बच्चा आता है कि बच्चा किस वक्त सोता है. Number one. अगर 12-1 बजे सो रहा है, then forget it. The child, that's one explanation. That child having behavioral issues. He's not sleeping on time. 7:30, 7:30 बजे, खासतौर पर छोटे बच्चे 7:30 बजे बेड टाइम. ठीक है? No excuses, that's the time. बहुत सारे parents बोलते हैं कि नहीं, we can't because हम तो 10-11 बजे सोते हैं, so how can we put the child to sleep at 7:30? As it's your child's health we're talking about. You put them at 7:30, otherwise, you're going to struggle to change any behavior. दूसरी चीज होती है screen time. Under 2 years, no screen time. After 2 years, you can have 15 minutes of screen times a day, 15 minutes, but with the parents. ठीक है? They're supervising. Never leave the child alone. So screen time, if your child is having excessive screen time, a lot of parents think, वो सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं iPhone दे दूंगी या स्मार्टफोन दे दूंगी, तो उस पर खेल होते हैं ना, my child will become smart through that. As like your child is not doing any social interaction, they're losing that skill. Okay? They're not learning how to communicate. There are different forms of communication. There is talking at you and there is talking to you and listening. Okay? So if your child is talking to you and listening, if there's a receptive speech, then that's fine. But then you have kids who are not having that receptiveness. So whether there's a pathology behind that or the child has been addicted to the phone and doesn't know how to pay attention and doesn't know how to do a receptive sort of conversation. So these are just important things that you really need to follow. Balanced diet, really important. Brushing the teeth twice a day, really important. No sugar, salt under 2 years, really important. And क्योंकि हमारे कल्चर में होती है ना, तो अल्लाह मालिक जो हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, it's okay. I'm just like, एक और चीज डॉक्टर अनोखी culturally, while we are talking about eating especially, is कि most of the time culturally, traditionally and very specifically our Pakistani families, अगर हम child obesity पे बात करें तो it is a completely no. मतलब माँ बाप एक्चुअली बुरा मान जाते हैं. सो हाउ कैन वी ड्राइव इट होम? आपने अभी बताया कि मुट्ठी बराबर पेट है. तो जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं जो एक्चुअली बताते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बस हेल्दी है बिकॉज वो बहुत अच्छी तरह खाता पीता है. That's the first thing I say. I was like, stop calling it healthy. It's not healthy. I was like, anyone calls me healthy, I get really upset. I was like, इसका मतलब है मैं मोटी हूँ. If you're calling me healthy, that means I'm मोटी in Pakistan. I was like, first you need to stop that, okay? It's not healthy, okay? What we do there, again, when we're doing the well checks, we're plotting the child on their growth curves. ठीक है? So we have an objective view. तो growth curves होते हैं ताकि जहाँ हम देखते हैं कि बच्चा का वजन और height कैसे बढ़ रहा है. And then based on that, we have weight for height to tell us, which is the baby BMI under 2 years. And then after 2 years, you have the actual BMI. So you actually have an objective view and an objective measurement. And yes, I have kids who are grossly obese, which means they're like several standard deviation above the what you call highest growth curve, the what you call BMI curve. They're supposed to be on the 50th centile. They're above the 98th centile. Okay, way above it. So I have a conversation with them, the parents, and I try to explain healthy habits. In बच्चों में classically बहुत सारा जंक फूड पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि मैं मना कैसे करती हूँ. I'm just like मैं मना कैसे कर सकती हूँ. And I'm just looking at them. I was like, आपके बच्चे पैसे कमा रहे हैं? नहीं. आपके बच्चे के पास पैसे कहाँ से आ रहा है? हमसे. आपके बच्चे जाकर खाना खरीदते हैं? नहीं. कौन खरीदता है? हम खरीदते हैं. तो मैं like, आप ही तो दे रहे ना खाना. आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं पैसे नहीं है. घर में कोई, मेरे घर में कोई, एवरीवन नोज मेरे घर में कोई चीनी नहीं है, मेरे घर में कोई जंक फूड नहीं है. अगर कोई लाता है ना, दे हैव टू हाइड इट. ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, सो देयर इज नो जंक फूड इन द हाउस. It's okay, you can have one junk food day, like, but
keep it a healthy, nothing something. Don't make the whole day full of junk food. Just pick one thing. Ice cream चाहिए, ठीक है? Friday को क्या चाहिए? Ice cream या cake, ठीक है? So they have that option. And usually जब बच्चे आते हैं ना, so if you don't expose them to all of this, जब आप बचपन में बच्चे को expose नहीं करते, उनकी आदत नहीं बन जाती. When they do get introduced to it, they do like it. That's true. मगर अगर उसकी आदत है दूसरी healthy snacks के लिए, what you can do is, तो अगर बच्चा आता है बोलता है मुझे केक चाहिए, I'm like अच्छा केक चाहिए, अच्छा ठीक है, नहीं है हम जाकर लेते. Would you like apricot instead? फल चाहिए या ये टमाटो चाहिए या मैं ये you know something healthy, sort of offer them alternative. And then suddenly अच्छा गाजर चाहिए, हाँ मैं गाजर खा लूंगा. Eat the gajar, they forget the cake. ठीक है? So if you these are tricks of the trade where you have to learn to deal with your kids. And just remember, if your child is overweight, it's because of you. Number 2, but yes, you always need to check with your pediatrician because sometimes there are physiological issues which can cause weight obesity. ठीक है? So we always review that. And then फिर भी आपको पता है कि दिल की बीमारी teenage years में शुरू होता है. The damage that's happening to the heart vessel is in your teenage years. तो अगर आप सोच रहे हैं मेरा जो मुन्ना का बच्चा है मोटा है, कोई बात नहीं, बड़ा होकर भी डाइट इस पर डाल देंगे, that is wrong. Every time your child is overweight, it is increasing the risk of heart disease, of type 2 diabetes later on in life. ठीक है? Everything you do under 5 years sets them for life. So it's really important to remember that. And then the biggest thing मेरे पास जो होते हैं, ये जो खास, I'm not going to say the name, ये खास मिल्क जो होती है ना, पाउडर मिल्क जो होती है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, जो सब लोग बेचते रहते हैं, बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा सही से नहीं खा रहा है ये दे देना. ठीक है? मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा सही से नहीं खा रहा है, मैं ये तो 2-3 दफा दिन में दे देती हूँ ये खास वाला दूध. मेरा 5-6 साल का बच्चा है, आई थिंक, या तो मैं बैठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आई बॉलिंग द चाइल्ड, और मैं देख रही हूँ ये तो बच्चा तो बिल्कुल मोटा है. And then I look at them on their growth charts, and yes, they're completely off the growth charts. They're morbidly obese. और फिर I explain to you, the parents are like, and I show them, मैं दिखाती हूँ, आपके बच्चे का वजन यहाँ पर होना चाहिए on this curve. आपका बच्चा यहाँ ऊपर है on this curve. आपको पता है ये जो आप पाउडर, ये जो खास वाली दूध होती है ना, खास तौर पर जो बच्चों जो सही से नहीं खा रहे उनको देते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो क्रॉनिक डिजीज होती है, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होती है, जो चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसऑर्डर, मेरे पास बच्चे थे जो सेंसरी डिसऑर्डर, फिजिकली नॉट ईटिंग, तो हम दे देते हैं. सो दिस गॉट टू बी अ फिजिकल इंडिकेशन, अ मेडिकल इंडिकेशन टू गिव दैट, क्योंकि वो हाई कैलोरी ड्रिंक है. तो मैंने बताया पेरेंट्स को, मैंने कहा ये हाई कैलोरी ड्रिंक है जो आप अपने बच्चे को खाना इसके साथ दे रहे हैं. तो इट्स नॉट गिविंग योर चाइल्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, इट्स मेकिंग योर चाइल्ड morbidly obese, and that's exactly what's happening. You put your child at risk for this. So any supplements, anything, बच्चे को कुछ नहीं मिलना चाहिए पीडियाट्रिशियन के बगैर. अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने लिखा है, अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने महसूस किया है कि आपका बच्चा वजन कम कर रहा है, there's some issue with the feeding and that's why we want to come in with the supplement, what you call milkshake, then that's fine. ठीक है? मगर आप अपने आप से नहीं देना चाहिए. And generally speaking, we don't, if you look at the American Academy of Pediatrics, if you look at all these guidelines, they don't recommend any multivitamins. Multivitamins कोई नहीं लिखता. UK में बोलते हैं under 4 दे देना, because वहां पर बहुत सारी विटामिन डी डिफिशियंसी होती है. ठीक है? मगर जनरली इन द यूएस एंड एवरीथिंग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर वो रेकमेंड करेंगे ना तो पेरेंट्स स्टॉप फोकसिंग ऑन द फूड, दे फोकस ऑन टैबलेट्स. बच्चे को टैबलेट्स दे रहे हैं और टैबलेट्स के साथ, दवाई के साथ हम बच्चे को सेहतमंद करते हैं. मुझे पूछते हैं कि बच्चे की एपेटाइट स्टिमुलेंट्स देना, मेरे बच्चे को कोई एपेटाइट स्टिमुलेंट्स नहीं होता, बच्चे की इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की दवाई देना. आई वाज लाइक दैट्स हिज बैलेंस डाइट. सही, अगर आपको इम्यून सिस्टम और व्हाट यू कॉल बूस्ट करनी है और बच्चे की सेहत बूस्ट करनी है, and you want to improve their behavior, make sure that they're having a routine schedule, proper bedtimes, balanced diet. That is the maximum you can do. Yeah. And before we touch up very shortly on immunizations, the importance of immunizations, Dr. Anoki, I just want you to just say a few words about growing pains. क्योंकि माँ बाप अमूमन बच्चे जब बताते हैं अपने माँ बाप को कि हमें जिस्म में दर्द हो रहा है, तो माँ बाप समझ नहीं पाते what growing pains are. So if you could just talk about. So honestly speaking, हमें भी नहीं समझ नहीं आता कि growing pains क्या होते हैं. We call them growing pains, but we don't even know if they're associated with growth.
ठीक है. But yes, the children usually complain of pains in the legs, and you really need to, like, parents like my champi, I do some champi and then it will relax them and everything. If the pain is waking your child up, if the pain is requiring your child to have medication, you need to have it reviewed. ठीक है. वरना even we don't exactly know कि बच्चे को ये growing pains जो हम कहते हैं क्यों होते हैं. We still call it growing pains because they usually happen during the years of growth. But we've not been able to show, or in my knowledge, I don't think there's been any research or evidence been able to show that it's actually directly associated with growth. So it's a misnomer that we still use, but right. It's benign. It's benign. The children grow out of it. They stop. But just remember, if the child is waking up with pain, if the child is requiring medication to settle the pain, you need to bring them in. And if it's going in the joints, okay, you need to bring. And if there's any swelling or discoloration or rash, you need to bring them in. So normally the kids are usually fit in well otherwise. But if they're not, then you need to have them reviewed. So always, again, जैसे हम अपनी body को सुनते हैं, listen to your body, listen to your child's explanations. Sometimes, you know, you'll be able to figure it out at home. लेकिन if not, talk to your pediatrician about it. Just talking about pain, just because I've had a recent case also, कि अगर आपके बच्चे को दर्द हो रहा है, जो भी जहां पर भी दर्द हो रहा है, maximum paracetamol देना है. इसके अलावा कुछ नहीं देना. अगर पैरासीटामोल एंड सम होम सिर्फ सेटलिंग से बच्चा सेटल नहीं हो रहा है, ये इंडिकेशन होती है बच्चे को दिखाने के लिए. We've had kids severe stomach pains, pre-teens. ठीक है, बड़े बच्चे तो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा हो गया, मैं अपना दवाई देती हूँ. Strong medications which suppress the pain. And I'm like, that's very dangerous. दर्द, exactly as you said, दर्द का मतलब है कुछ हो रहा है जिस्म में, ठीक है, तो पैरासीटामोल से ज्यादा नहीं देना चाहिए. अगर बच्चा is not settling on that, that means you need to show the child to see कि क्या हो रहा है. So it's really, really important. So that's also a warning sign. Extremely important. And again, self-medicating is a big no-no. अगर माँ बाप समझ जाएं. No antibiotics without a doctor. Absolutely, absolutely. और डॉक्टर को प्रेशर नहीं करना कि एंटीबायोटिक्स देने के लिए. I think बहुत वो जो लीफलेट पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, अगर वो सब ब्लो अप करके सब अगर प्रिंट आउट्स लगा ले, they're just really you know, really they drive you insane. because उसके ऊपर अगर आप देखिए, जैसे हमारे मैसेज में कि हमें ड्रिप लगा दे, बिकॉज ड्रिप से मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी, या फिर माँ बाप कहते हैं भाई जल्दी से इनको 2018, I think it was 2018 or was it 2019? My years are all, since this pandemic, I feel like it's been a decade. I can't remember my years anymore. So was it last year? I think it was last year. वो लड़काना में HIV क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आदत है, पाकिस्तान I think has the second highest hepatitis C rates in the world. Hepatitis C is basically through the bloodborne disease. क्योंकि हमारी आदत होती है कि बीमार है तो क्या करे, टीका लगेगा तो फौरन ठीक होगा, फौरन ठीक होगा. ये गलत बात होती है. Nowadays, Europe and US we're moving away from hospital care. We're moving more onto home care. We're moving away from IV fluids and all these things. यहाँ पर क्या हो रहा है कि we're doing it even more. कि नहीं हमें करना है टीके के साथ, इसके साथ, एंटीबायोटिक के साथ ये होगा. Antibiotics are very good when indicated. मगर हमारी antibiotics काम करना बंद कर रही हैं. Typhoid drug, multi-resistant drug typhoid है ना, multi-drug resistant typhoid हो रही है ना, हमारे कराची में है. It's here. Because people are popping so many antibiotics. मेरे सारे खानदान और मेरी सारी जो सहेलियां दोस्त हैं ना, उनको पता है कि अनोखी के सामने कभी नहीं बोला कि हमने खुद से लिया है. उन्होंने मैंने भी सुना था कि अनोखी के सामने, डॉक्टर अनोखी के सामने एंटीबायोटिक का नाम मत लेना राबिया, वरना you will be in really waters. But again, I'm saying antibiotics is a very good drug. वो बहुत अच्छी what you call दवाई है. हमारे बच्चे जब उनके खुदा न खास्ता निमोनिया हो जाती है या टाइफाइड हो जाती है, ये चीजें होती है ना, तो ये हमको बचाते हैं, ठीक है. ड्रग्स असर करती हैं. हाँ, मगर अगर हम इसी तरीके से अब्यूज करेंगे तो काम करना खत्म हो जाएगा और फिर हम देखेंगे लोग एक से दूसरा लोग मर जाएंगे from things that we were able to treat before. So it's really important to remember that antibiotics, you use them, you lose them. So be very sensible. And another thing, viral disease, वो बहुत लोग बहुत
हैरान हो जाते हैं जब मैं बोलती हूँ वायरल में भी बहुत ऊंची फीवर होती है। और अब पैंडेमिक, द परफेक्ट थिंग विद द पैंडेमिक, मैं बोल रही हूँ आपको पता है कोरोना में हाई फीवर होती है, दिन भर फीवर बुखार होती है, सांस की कमी हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, लोग बहुत बीमार होती है। दिस इज अ वायरस, दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ वायरस, ओके। एंड इसलिए हम इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि द एंटीवायरस वेरी ट्रिकी, वेरी ट्रिकी टू ट्रीट वायरसेस. We are lucky our body is generally quite well at fighting off the common viruses, ठीक है। मगर जब म्यूटेट हो जाती है, जब ये ऐसी कोरोना वायरस आ जाती है तो हमारी तो हम सब देख रहे हैं अभी हशर बहुत बुरी होती है। तो आपको याद रखना है कि just because they have fever it doesn't mean bacterial. Viruses can be just as nasty and उसके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। Absolutely. Dr. Anoki, before we sort of wrap our session up, we'll just touch up upon immunizations and the importance of from birth, say जब बच्चा पैदा होता है, from the first booster till the first 1 year, the important immunizations. Okay. तो बच्चे की जो हिफाजती टीके आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। बहुत सारी बीमारियां हम आजकल नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे इम्यूनाइज्ड हैं, हम इम्यूनाइज्ड हैं, जनरेशन पे जनरेशन इम्यूनाइज्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल डिफेंस में रह रहे हैं, आप अपने जानने वाले में किसी के पास टेटनस नहीं होगी, आप केपीके जाइए, केपीके में न्यू बॉर्न्स को टेटनस हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनको माँ की टीके नहीं लग रही है, ठीक है। we don't see a lot of disease because we're immunizing, ठीक है। हम टीके क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बीमारियां बच्चे को, और बच्चे छोड़ो, बच्चे हम बुजुर्ग adults can kill, they disable and they kill. तो जब बच्चा पैदा होता है तो दूसरी बात याद रखनी है, जो इम्यूनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड बेसिक जो है वो pretty much the same होती है, ठीक है। मगर डिपेंडिंग ऑन एरियाज वी हैव अ फ्यू एडिशन और अ फ्यू लेस, ठीक है। तो पाकिस्तान में हम बीसीजी लगाते हैं बर्थ, क्योंकि पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत है, तो बर्थ पैदाइशी आपके बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ बीसीजी लगती है। फॉर एग्जांपल यूके में भी बीसीजी लगती है, मगर उन पॉपुलेशंस में ज्यादातर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो यहाँ आते रहते हैं तो उनको भी लगती है, मगर द जनरल पॉपुलेशन दे डोंट ऑलवेज डू बीसीजी, मगर हमें लगते हैं, ठीक है। बर्थ पर पैदाइशी पोलियो लगती है, वो 0 डोज कहलाती है, ठीक है। तो ये दो है जो पैदा होते हैं 6 हफ्ते पर। प्लीज आप अपने बच्चे के, ठीक है, डिले मत करना। जब आप डिले करते हैं आप अपने बच्चे को एक्सपोज रहते हैं, द चाइल्ड इज एट रिस्क ऑफ डिजीज, ठीक है। 6 हफ्ते पर you get your penta. Penta is basically covers your diphtheria, your pertussis, your tetanus, your Haemophilus influenza, your hepatitis B, which is basically tetanus, वो जो होती है उर्दू में क्या कहला, it kills diphtheria, high fever, you have what you call film producing across your throat, again suffocates, kills. Whooping cough, pertussis, जो छोटे बच्चे में apnea हो जाती है, the children stop breathing. Haemophilus influenza दोनों pneumonia और गर्दन तोड़ करती है, ठीक है। Hepatitis B liver cirrhosis and liver cancer करती है, and then we have your pneumococcal which fights again दोनों गर्दन तोड़ और what you call pneumonia, and then we have your polio, ठीक है। तो ये हम, and then रोटा वायरस जो एक वायरस होती है जो बहुत शदीद मोशन डायरिया करती है, जो बच्चे को डिहाइड्रेट और वो बच्चे मर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दीज 3 दैट आर हैपनिंग, and then you have your polio. So at 6 weeks, again at 10 weeks it's repeated, ठीक है, क्योंकि बूस्टर मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम की यादाश्त थोड़ी सी कमजोर है, तो हम इसको फिर से रिपीट करनी है ताकि इम्यून सिस्टम को याद दिलाएं कि ये बीमारियां हैं, हम इस तरीके से लड़ सकते हैं। फिर 4 हफ्ते के बाद 14 वीक्स पर अगेन, बट 14 वीक्स पर स्लाइटली डिफरेंट, अगेन यू हैव द पेंटा, अगेन यू हैव द न्यूमोकोकल, मगर उस वक्त आईपीवी और ओपीवी होती है, तो इनएक्टिवेट पोलियो एज वेल एज ओरल पोलियो हो जाती है। और फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को फ्लू वैक्सीन दे सकते हैं। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द ईपीआई स्केड्यूल, बट यू कैन डू इट एज पार्ट ऑफ द प्राइवेट स्केड्यूल, एंड आई डू हाईली रिकमेंड इट। और जब आपके बच्चे को पहली दफा फ्लू वैक्सीन मिलता है ना, जो 8 साल की कम उम्र के बच्चे जो पहली दफा फ्लू वैक्सीन मिलती है, so you have to give them a booster shot after 4 weeks, ठीक है। But then per the EPI schedule, the next vaccine is at 9 months, which is your measles and your typhoid. Again, मैंने बोला था ना कि चंद मुल्कों में हमारी स्केड्यूल थोड़ी सी दूसरी होती है। पाकिस्तान में
हम मीजल्स 9 महीने और टाइफाइड देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत एंडेमिक होती है, यहाँ पर बच्चे मीजल्स से खसरा से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं, तो इसलिए हम इस उम्र में करते हैं। बाहर की उम्र में हम 1 साल पर मीजल्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ MMR, ठीक है। Then at 1 year again you come in with your private vaccines जो EPI पर नहीं है because the government cannot afford it. I wish they listen and one day they pay for it because I think all children should have vaccines for free. You have your MMR, you have your chicken pox, you have your hepatitis A. Then you have 15 months का बच्चा। तकरीबन 1.5 साल पहले सारे स्कूल्स में खसरा फैल गया था एंड स्कूल्स को कुछ chicken pox or measles? खसरा is chicken pox. Okay, what is measles? Measles is, I can Google it for you for you alongside. I thought khasra was measles, so that's why I was saying khasra. It will take me a second. अच्छा हमने no, but anyway, हमने please go on. I'll yeah और फिर 15 महीने पर फिर से measles का वैक्सीन होता है and then you have 15 to 18 months again you have your booster for your diphtheria. Again, this is the measles is the government one, but then all the other ones are basically the private ones which are recommended by the CDC. So I also recommend them is your your diphtheria, pertussis, tetanus, so the penta that you had before, to repeat that with the injected polio. And then you have your booster for hepatitis A, and then you have your meningococcal C also. So they're recommended ages after 1 year where you do that. So most places pretty much do it at the same time. Some places may have slight variation. And मुझे बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं मगर यूके में पहला टीका 2 महीने पर रखता है, हमारे 6 हफ्ते पर। I was like, हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, so we want to protect our children as soon as possible, ठीक है। So टीका लगाना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और आफ्टर द फर्स्ट इयर्स इट्स नॉट द एंड, 4 से 6 साल तक और भी प्राइवेट वैक्सीन लगती हैं और फिर 11 से 12 साल तक फिर से बूस्टर लगती है। सो एट 4 to 6 years another booster, and then 11-12 years another booster, and then yearly flu vaccine. और प्लीज 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 मेरे बात सुनिए कि अगर गवर्नमेंट कोई वैक्सीन कर रहा है क्योंकि आउटब्रेक हो रही है, जैसे 2 साल पहले उन्होंने मीजल्स वैक्सीन की किया था, टाइफाइड की वैक्सीन किया था, प्लीज वैक्सीनेट योर चाइल्ड, अलाउ देम टू वैक्सीनेट योर चाइल्ड। अगर आप अपने बच्चे को टीका लगाने से मना करेंगे ना तो ये बीमारी फैलने से बंद नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम कर रहे हैं तो आप प्लीज करना देना, ठीक है। वैक्सीन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, वैक्सीन सेव लाइव्स, ठीक है। और and I'm saying a lot of people are little hesitant क्योंकि उन्होंने ये बीमारियां कभी देखा ही नहीं है। जैसे लोग गुठली देते हैं ना, हनी, क्योंकि उन्होंने कभी बॉटुलिज्म नहीं देखा। नेशनल इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ जाकर देख लो, वहाँ की पीडियाट्रिशियन के साथ बात कर लो कि उनके पास कितने आते हैं हफ्ते में। हफ्ते में just not हफ्ते में डॉक्टर दिनों में, I don't know. You know, and to go back to your thing, you're absolutely right. खसरा is measles. Chicken pox को because मैंने बचपन में सुना था लाकड़ा काकड़ा and खसरा, तो I got confused, but लाकड़ा काकड़ा is basically chicken pox and खसरा is measles. I know, because you kept saying खसरा and I was just like, really, you got me questioning my own Urdu. No, I apologize, but I didn't want to come out and say lakda kakda because I was like a little hesitant कि ये जो मेरे parents ने बोला था, now it's sounding a little dodgy, but upon googling it has come about. So Dr. Anokhi, it's always such a pleasure to talk to you. I know that you've had full day and you've still allotted time for us. Just to sort of end the conversation, I just wanted you to say a few words and highlight the importance of इस वक्त अंडर द पेंडेमिक। हम लोगों ने इम्यूनाइजेशंस की बात करी, पेरेंट्स को समझाने के लिए कि क्यों ये इम्यूनाइजेशंस हमने ली थी। इस वक्त कोरोना वायरस का अभी सुना है कि वैक्सीन आ गए हैं एंड बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट देयर आर स्टिल सो मेनी मिथ्स, so many untrue facts attached to coronavirus जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते। For example, जो बच्चे in closed spaces में मास्क के बगैर हैं, and there are बहुत सारे मॉल्स में भरे हुए हैं बच्चे हर जगह जा रहे हैं। So to sort of tell parents कि God forbid if your child contracts COVID,
what are the steps they're looking at, what is the isolation time, and how to take care of your child and how to sort of protect others आपके बच्चे के So around. first of all, please do not take your child to these shopping malls. Do not take your child to places unnecessarily. हमारा we are in the second wave. ठीक है, अस्पताल आहिस्ता से भर रहे हैं. ठीक है, the next thing we'll see is the ICUs filling up. You need to protect your children. So far till now, the literature still shows कि it's mild to moderate disease in children. मगर मुझे फिर से highlight करनी है कि हमें नहीं पता long term में बच्चे को क्या होगा जिनको कोविड हुई भी है. ठीक है, treatment नहीं है कोविड के लिए. If the child God forbid gets it, it's the same symptomatic treatment like you do for any cough and cold. मगर आपको ख्याल रखना है. When I'm saying mild to moderate symptoms, your child may be that one very rare child who has severe disease. ठीक है, it doesn't mean that every child is going to have mild to moderate. Majority have mild to moderate. So please protect your children. अगर वो 2 साल से ऊपर है उनको मास्क, एज अप्रोप्रिएट मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और प्लीज उनको अननेसेसरीली बाहर नहीं ले जाना शॉपिंग मॉल्स में और इन जगहों पर. अगर आपको आपके बच्चे थोड़ी सी इरिटेटेड हो रहे घर पर, तो आप उनको थोड़ी सी मेक अ लिटिल ड्राइव और अ वॉक, और आपको एक बबल बनाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी आर रेकमेंडिंग, क्योंकि मुझे पता है ये pandemic is going to go on till the vaccine comes, and even post vaccine is going to go on for a while. So what you want to do is, we can't do this permanently. मेरे साथ बहुत सारे बच्चे को anxiety, छोटे छोटे toddlers को anxiety हो रहे हैं, aggression हो रहे हैं. So I've asked the parents to create a bubble जिसके अंदर आपको पता है कि इन खानदानों में ये किसके साथ मिल रहे हैं, that they're not meeting with anyone else, just you and your kids, that they're trustworthy, that they're not going to allow themselves to be unnecessarily exposed. And then with those kids, even then with masks and proper social distancing, etc., allow your children to play and linger, ताकि इनकी थोड़ी सी mental health के लिए थोड़ी सी relief, because it becomes, even for the children, becomes very stressful. They're all becoming very aggressive and angry, that kids like hitting and throwing things, etc. But the moment they create a bubble, it settles down. मगर bubble में आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है कि you just have one person जो जाकर शादी पर चले जाता है. ठीक है, शादी पर पता नहीं कितने लोग बैठे हुए विदाउट मास्क, एंड देन सडनली द नेक्स्ट 2 days यू हियर कि हाय वहां तो 10 लोग और फिर 15 लोग और फिर 20 लोग को कोविड हुए, एंड देन यू हैव टू आइसोलेट. और कभी कभार लोग भी बदतमीज होते हैं, वो आपको नहीं बताते कि हमें एक्सपोज हुए, कुछ नहीं होते, वो बस दे कंटिन्यू एज इज. सो नीड्स टू बी समवन हु इज ट्रस्टवर्दी. यू नीड टू क्रिएट योर बबल. यू नीड टू फॉलो द practice the what you call prevention guidelines. I know people who died of COVID. I know people who've been very sick of COVID, who've gotten very sick from COVID, have been on the ventilator, etc. In my acquaintances, etc. So it is a very serious disease. Just because you're not seeing it, just because most of the people you're seeing were asymptomatic or had just mild disease, doesn't mean that you will have any such luck. Okay? And by allowing the disease to spread, it's not just about you exposing your children, it's also about when everyone's going out. So my patients with asthma, I know I have like adults, colleagues who are asthmatic, etc. They're non-medical, but they have to go out and do their stuff now. So they basically try to do it as quickly, go and come. मगर जब वो जा रहे हैं और भीड़ सारे लोग खड़े हुए हैं, वो मास्क नहीं पहन रहे, तो वो डर से भागकर they go away. They don't go to those places. But it's just, it limits to where they can do their get their emergency supplies and things from. So please be thoughtful. Please practice proper SOPs. जब आप मॉल में जा रहे हैं, अगर बच्चों के साथ नहीं जाना, और अगर आप शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, तो प्लीज, जस्ट बिकॉज यू एंटरिंग द शॉपिंग सेंटर, उन्होंने मास्क चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, बहुत सारे लोग अंदर जाके सब कुछ उतार देते हैं. सो प्लीज रिस्पेक्ट अदर पीपल. आपका मास्क दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, your mask is not necessarily protecting you unless you're wearing an N95, which is really sealed off, which is very painful. You know, I mean, I have to wear it and it's very painful. I end up getting marks and my jaw hurts at the end of the day. It's really awful. So unless you're wearing that, or you're wearing a proper respirator, etc., the mask is basically stopping your droplets from spreading around. Okay, and you're protecting other people through that. And please do not अपने बच्चे को shopping और ये सारे जगह पर नहीं. I'm seeing babies.
I'm seeing babies. I go Target shopping, मैं जाकर भाग कर अपनी चीजें उठाकर फौरन निकल आ रही हूँ, वहां पर माए टहल रही है, विंडो शॉपिंग, ये वो सब कुछ कर रहे हैं अपने बेबीज के साथ. I feel like going up and scolding them, but I don't. I was like, I don't have time. I need to get out of here as fast as possible. But yeah, you need to be very, very careful with that. Okay? It is spreading. It's spreading a lot. Where last time in the last wave, I didn't have that many calls coming in. Now I'm getting very frequent calls, doing a lot of telemedicine because the parents have tested positive and they're very concerned. And the interesting thing is, these are the parents who've taken the extra step to be extremely precautious, but they know that somebody's in their circle has not been and is not speaking up. But they're like, it doesn't matter. We still tell everyone we're COVID positive. We're going into quarantine. So quarantine is for 2 weeks. Okay? And you should practice it, because even if you are not getting severe symptoms, you should practice quarantine to stop the spread of disease. I have an old father who refuses to stay home. Okay? He goes for his walks, etc. And if people who are supposed to be in quarantine are outside, you're putting him at risk. Okay, there are other elderly parents and other elderly people who are out and about. We are trying to protect them, etc. But if it just needs one person who's meant to be in quarantine who's just roaming around like that. Okay, so it's just really, really important to not be selfish. Think about other people. Practice your quarantine. Speak to your physician. और दूसरी बात है, अगर आपके बच्चे को नज़ला जुकाम मोशन या कुछ भी है, because बच्चे में symptoms are very diverse, assume they have corona and quarantine them for 2 weeks. Don't say कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से it's a viral. हमारे में ज्यादा तौर के बच्चे जो है ना, becoming this is just a common virus, regular diarrhea ही हो रहे, मगर that can also be COVID. So I still tell all my patients, I was like, isolate yourself for 2 weeks until at least for 10 days, and the child is 3 days symptom free, or for 2 weeks. I was like, you need to assume that this is corona until proven otherwise. Otherwise, swab them on 7 days, on the 7th day, to see that it's not. So it's really, really important. I can't emphasize it enough. I feel this energy of yours, you cannot stress it anymore, because आपने इतना stress करा है. You're constantly spreading awareness. You're constantly teaching, constantly telling parents. So I hope all the parents who are listening to you. So and when the vaccine comes, vaccinate. Okay, when the vaccine comes, vaccinate. Okay, please don't hesitate. Just vaccinate. You will hear lots of stories. अगर आपने पैरासीटामोल की साइड इफेक्ट्स कभी पढ़ी है, जाकर अभी घर में जाकर निकालो पैरासीटामोल, उनकी साइड इफेक्ट्स जरा पढ़ना. इतनी लंबी लिस्ट, आइबुप्रोफेन की लंबी लिस्ट, जो आप बहुत आसानी से टॉफी की जैसे अपने बच्चे को देते रहते, बुखार हो रही है दो, बुखार हो रही है दो, उसकी लंबी लिस्ट पढ़ो. ठीक है? And these are considered very safe medications. So every medication has side effects. Okay? So please do not get caught up into that. When the vaccine comes, vaccinate, because that's the only way we're going to stop the spread. The only way we're going to be able to battle the disease. And even then, we're still going to be most probably masking and doing all the SOPs for a while. For a while. Because we're not going to be able to vaccinate the entire population in one go. Absolutely. Thank you so much, Dr. Anokhi, for taking out time and for giving us so much valuable information. I hope you have a restful weekend, and I can't wait to speak to you again. Thank you so much, and take care of yourself. And that was a wonderful, wonderful session with Dr. Anokhi. Again, Dr. Anokhi has stressed that if you are showing symptoms, please isolate. Agar aapne apna test karwa liya, and if you're positive, do fulfill the isolation rules. Follow through, not just for yourself. Don't be selfish. Be very, very mindful कि आप दूसरों को लगा सकते हैं ये बीमारी. And इस वक्त there are बहुत सारे लोग are actually fighting for their lives. They're on the ventilators. And again, coming to children, for all those parents who are watching right now and will be watching later, this is a very, very tough and tricky situation. हम यही सोचते हैं कि हम किस तरह अपने बच्चों के साथ आइसोलेट करेंगे, किस तरह क्वारंटीन करेंगे. But it is really, really important to think of others. Be very, very kind to other people, because हर किसी के सर्कल या हर किसी के बबल में there is someone who is immunocompromised. So take care of yourselves. Take care of your families. Wear a mask.
and protect others and yourself. Take care. Until next time. Khuda Hafiz.